Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with first Python data structure, that is list. So we saw the definition of list, then how to create list, right? How to access elements of the list, different ways, just by mentioning the index to access single element. If you want a part of the list, then we use slice operator. If you want elements at a fixed step, then we use step as well. Okay. Then yesterday about modifying also. I've told you some part, but let's recall it again. Now you can modify using slice. Like if you have a list, okay, and some part of that list, that is from one index till another index, you want to replace those elements with some another element. Get it? So that another also should be a iterable. Iterable in the sense it can be a list, it can be a tuple, it can be string as well. Okay. So if you want to replace some part of the list, whatever elements are coming in it, with some another elements, that also you can do it. And if you want to replace the element at fixed interval, whatever elements are coming at a fixed interval, that elements you want to replace with some another element. So that is also possible. Two ways are there. Both we will be learning. List, start index, end index. End is exclusive. I hope you know it. And when you don't give end, it will go till the end of the list. When you don't give start, it will start from zero. When you don't give both, it will take entire list. All these things yesterday we have seen. Negative index is possible. So from start till end, as many elements come from that start till end, they are replaced with this iterable elements. Now, not necessarily the number of elements in the iterable and the number of elements in that range should be same. ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट ये इटरेबल में होने चाहिए. कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. Getting? They can be more also, less also, right? One by one we will discuss. First is replacing. Elements अगर replace करना. Okay, so you just have to give the start index, end index equal to element. ठीक है? See, this is your list. Give the start index, end index and a iterable. ये iterable list भी हो सकता है, tuple हो सकता है, ये string हो सकता है. कल मैंने ये बताया भी है. Now from where till where? 0, 1. This is 1 the position. 1, 2, 3. 3 is exclusive. So only these two elements. These two elements will get replaced with this list element. So how many elements are in this? 2. So 200, 300. So in this example, you can see two elements are getting replaced with 2. It is not hard and fast rule. Two elements can get replaced with 3 as well. And two elements can get replaced with 1 also. कम ज्यादा भी हो सकता है. Getting? ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है. See, from 1 till 3, 0, 1 till 3, 3 exclusive है ना, तो 1 and 2. ये दो एलिमेंट किससे रिप्लेस हुए? 200, 300. Yesterday, an example also I've shown. Still, if you want, again I'll take. I'll create a list A equal to, suppose 10, 20, 30, 50, 60, 70. Suppose I'm creating a list. This is your original list. Now A 1 colon 3, suppose I'm writing, equal to this side. As I said, it can be a list, it can be a tuple, anything. I'm writing 1, 2, 3, 4. So no hard and fast rule, like how many elements you are replacing and by what you are replacing. The count should be same. It can be less or more. So 1 and 2. 3 is exclusive. Now these two elements will get replaced with
this list element. Now, if you check the modified list, you'll see 10, then 1, 2, 3, 4, and then 40, 50, 60, 70, because these two elements are replaced with this. Okay? As we are using Google Colab for the first time to establish connection, and then it will start. Okay? Can you see 1 and 2? These two elements, three exclusive, again I'm telling, so 1 and 2. These two elements are replaced with 1, 2, 3, 4. Getting? And already I have told you, right side you can have any iterable. ऐसा कोई रूल नहीं है. जैसे अभी ये A1:3 लिखता हूं, equal to here I'm writing सीता. ठीक है? And print है. तो सीता is also coming under sequence category. इसको traverse कर सकते हैं. तो it will take one letter, S, E, E, T, A. This way, 5 characters are going to replace at this 20 and 30. See, 20, 30. पे ये 5 characters replace हो गए. ठीक है? I hope this part is clear. Then, now using this technique, you can insert element also. But for insert, when you want to insert, give the start and end as same. When you'll give start and end as same, what will happen? Like just start L of 2:2 ही दिया. So you know that start, but end be same है and end already exclusive है. So 0 elements are getting replaced. In short, कितने element replace हो रहे हैं? 0 element are getting replaced with this iterable. So in short, it will do inserting work. Correct? It will do the work of inserting. See, this is your original list. Now I have written 2:2. 2:2 means start from 0, 1, 2. Okay? But from 2, how many element? 0 element. Why? Because the end is also 2. And आपको पता है कि end exclusive होता है. So it will start from 2, and how many elements are getting replaced? 0 element. So 0 elements are replaced with this. तो यहाँ आ जाएगा 10, 20, 25, 27 and 30, 40, 50 shift हो जाएगा. Get it? So in short, what you'll get over there, 10, 20, 25, 27 and 30, 40, 50 will get shifted away. Because at the tooth place, शुरू 2 place से किया, but 2 place पे कितने एलिमेंट इंसर्ट करने, मैं रिप्लेस करना है 0 एलिमेंट, क्योंकि ये रेंज क्या बना रहा है? 0 एलिमेंट्स बना रहा है. एंड भी सेम है ना, एंड एंड एक्सक्लूसिव होता है. तो दिस रेंज मेक्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 0 एलिमेंट. So 0 elements are replaced with 25, 27. So whoever was at 2 will get shifted ahead. Get it? You can check with this as well. इसी मैंने ले लेता हूं. Okay, see, here I'm writing A colon, whatever index you can give, 3:3 equal to Sita ले लेता हूं, and print A. It will start from 0, 1, 2, 3. ठीक है? 3 is 40. But from 3, how many element? 0 element. So 0 element will get replaced with Sita only. So SEETA. And 40, 50, 60, 70 will get shifted ahead. Get it? So if you see the output, 10, 20, 30, 0, 1, 2. SEETA, and then 40, 50, 60, 70 are shifted ahead. Get it? So you can do inserting work also. तो जब भी इंसर्ट करना तो स्टार्ट एंड एंड क्या रखो? सेम रखो. ठीक है? नाउ यू कैन डू डिलीटिंग ऑल्सो. डिलीट मीन्स आपकी लिस्ट श्रिंक हो जाएगी, बट डिलीट करते समय
iterable, empty iterable. L, you can give the start index, end index, and here you will give a empty iterable. ये iterable empty देना है, तो empty iterable दिया, तो what is going to get replaced? Nothing. But how many element from start till end? तो start से लेके end तक जितने भी element है, वो किससे replace हो रहा है? Nothing. तो ये list shrink हो जाएगा. And elements क्या हो जाता है? Delete हो जाएंगे. Correct? See, this is the list. I am writing 1:4 equal to empty list. Now what is 1:4? 0, 1, 2, 3, 4. 4 is exclusive. 0, 1, 2, 3, 4 is exclusive. Now these three elements will get replaced with an empty list. Your list will get shrink to 10 and 50. Get it? You can print and see. Suppose in this only, I'll try to show you. Okay, this is your original. Now I'm writing 2:4, suppose, equal to empty list. And then you can print and see your list. Up 2 से लेके 4 तक 0, 1, 2. This is 2, 3, 4 exclusive. Now these two elements are replaced with an empty list. Your list is shrink 10, 20, 50, 60, 70. 10, 20, 50, 60, 70. Getting this? And you can replace elements at a fixed interval as well. अगर आपके पास एक list है, ठीक है, and you want to replace the elements at a fixed interval, step पे, ठीक है, fixed interval पे जो elements है, उसको किसी दूसरे iterable से replace करना. First element will go here, second here, third here. So elements at a fixed interval, you want to replace with the elements from your another iterable. You can do it. That time you have to write your list, whatever the start index is, end index is, and the step. Okay? Equal to the iterable. But in this context, only the restriction is in this case that how many elements are getting formed with that step. ये start से लेके ये end तक with this step. जितने elements बनते हैं उतने element ये iterable में होने चाहिए. If there are less or more, it will generate a error. I guess yesterday ये भी दिखाया हुआ है मैंने. ठीक है? Example देखो. This is your list. ::2. Now ::2 means will it take the entire list, guys? Yes. Okay, it is going to take the entire list. And step क्या दिया है? 2. As step is 2, it will take at fixed interval. First, फिर ये next, फिर ये next. अभी ये each step पे कितने elements बन रहे हैं? At a step of 2. The first, then third, then fifth. How many elements are getting formed? 3. Then in this iterable also there should be 3 elements. 10 will be by 100, 300, 500. But if you are having less or more element, it will generate an error. This is the note point. See here. When using a step, the number of replacement element must be equal to the number of selected element. Means जितने element आप replace करने वाले and जितने elements आप select करने वाले at that step, the count should be same. This was not when you don't use step. जब step नहीं use करते हो तब वो restriction नहीं, but step के समय है. Correct? Suppose. Okay, this is your original list. Now I am writing A: 2, suppose. Okay, now A: 2. So what will come? 10, 30, 50, and 70. Is it right? 1, 2, 3, and 4. 4 elements will only come. So you have to replace it with 4 only. The count has to be same.
It can be a tuple, list, whatever. Okay, you can take this way also, SITA, right? And now if I'm printing it, so at 10th place, at 10, what will come? S. At place of 30, I, 50, T, and 70, A. Check. Print करके देखो. SITA. Is it right? Okay. So I hope you got it. But suppose इसमें कम ज्यादा elements है. Like I'm taking Sita. It will give you error. See. Attempt to assign sequence of size 5 to extended slice of size 4. ये स्टेप जब देते हो तो उसको एक्सटेंडेड स्लाइस कहते हैं. It is not a continuous slice. It is a slice at step. So according to that extended size, the slice size is 1, 2, 3, and 4 only. Therefore, in this iterable also, there has to be 4 elements. If there are more or less, it will give you error. Now it works. Okay? So I hope this part is clear to you. Is it right? You can give me quick confirmation. Yes, sir. Then we will be using some methods of list. Now, some may have a confusion between what is a method and what is a built-in function. At this moment, like we are not more into object-oriented programming and all till now. We have to reach to that unit. At this moment, just remember that whenever you write list object and then dot, and then you call that any function, whatever the function is, then it is a method. In short, whenever you're calling that function in context of a list object with a dot operator, then we'll call it as a method. For time being, अभी के लिए ऐसे समझ लो. And when you call any function directly and you're passing that list object to it, then understand that it is a function or it is a built-in function. Okay? तो मेथड कब कहना है, फंक्शन कब कहना है, दोनों फंक्शन ही होता है, याद रखना है. But when you directly call it and you pass a list object, then it is a function. When you call it in context of a object with a dot operator, then it is a method. ठीक है? So there are some methods of list. One by one we will see. The first one is append. Append is a method. Why we have to call it method? Because it is getting called or invoked in context of a list object with a dot operator. ये append को call कैसे कर रहे हो? List object के context में dot operator use करके. Therefore, it is a method. Now, what this append does, it takes the element. The element can be anything. Element can be a integer, it can be float, it can be complex, it can be string, it can be list also. एक list दूसरे list में add कर सकते हो. It can be tuple, anything. It will just take that element and add at the end of the list. इसलिए उसको append का. Append is always at the end. Prepend is always at the beginning. ठीक है? So it will add this element inside that list. Okay? See, it is used to add element to the last position of list. Example, ये अपना original list था. Fruits equal to apple, orange. I am writing fruits dot append mango. Mango will get added at the end. Append कुछ खुद return नहीं करेगा. Append doesn't return anything. Okay? अगर आप चेक करते हो कि append ने क्या return किया, it doesn't return anything. None होता है, no? It doesn't return anything. It has just added this mango at the end of fruits. Yeah, add again. Now, if you check fruits, it will be apple, mango, sorry, apple, orange, and as I said, you can add anything. ठीक है? जैसे देखो, अगर मैं एक शुरुआत में empty list create करता हूँ and फिर a dot append, I'll write here, okay, hello लिख देता हूँ. A dot append and 4.5 add किया. A dot append
100 ऐड कर देता हूँ, a डॉट अपेंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर देता हूँ, a डॉट अपेंड एक बुलियन वैल्यू ऐड कर देता हूँ, a डॉट अपेंड एक टपल ऐड करता हूँ 1,2,3 पूरा टपल ही जाएगा, a डॉट अपेंड एक वापस लिस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, 10, 20, 30. So many values you can append, and then you print and see. All these values are added at the end, one after another. Can you see? So first it was an empty list. First hello got added, then 4.5, then 100, then 4 plus 5j, then true, then this tuple, then this list. This list is also treated as one element. ये लिस्ट पूरा एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ये टपल एक एलिमेंट, और ये पूरा एक एलिमेंट इस लिस्ट में चला गया, दैट इज ए, ये लिस्ट लिस्ट में चला गया, तो लिस्ट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल. एग्रीड? तो आई होप अपेंड इज क्लियर. देन if you want to insert any element at a particular position, element again can be anything. As I said, ये element कुछ भी हो सकता है. It can be a string, integer, float, complex number. It can be a list. एक list में insert कर सकते हो. This is also a method. Why? Because you're invoking it in context of a list object with a dot operator. जब भी किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कॉल करते हो विद अ डॉट ऑपरेटर, it is a method. Now what it will do? It will add the element in your list at the given position, and whoever is already there in that position is shifted ahead. उस पोजीशन पे जो कोई है वो आगे शिफ्ट होगा. ये पोजीशन नेगेटिव दे सकते हो, पॉजिटिव दे सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है. But at that position, this element will get inserted, and whoever is there at that position is shifted ahead. Understanding? Clear? And here I'll tell you कि ये position अगर आपने limit के बाहर दिया रहेगा, तो it doesn't give any error. It will just add this element at the end or in the beginning. I'll show you. इसका demonstration. We'll take this list only. ये जो अभी बन चुका है, okay? यही लिस्ट देख लो, ठीक है. इन दिस आई एम राइटिंग a डॉट इंसर्ट. ओके, ये गूगल कोलैब का एक बेनिफिट है. व्हेनेवर यू से डॉट, इट विल गिव यू द लिस्ट. सर्च कर सकते हो उसमें से इंसर्ट, देन यू कैन गिव द पोजीशन. सपोज आई एम गिविंग पोजीशन 2 and value, suppose I'm giving run, and then we can print and see. Now who is at 2 position? 0, 1, 2. Who is at 2 position? 100. Their RAM will come and 100 will be shifted. 100 and all will be shifted ahead. See, 0, 1, 2. So at 2th position, RAM has come, right? And who was at 2th position? 100. They are shifted ahead. Okay. Now in this, I just want to tell you, like if I'm writing insert and I'm giving position, suppose 15, and value, suppose 1000. But we don't have position 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15th is not there. Automatic, it will insert at the end. Getting? This element will be inserted by default at the end. You're getting? अगर आपका इंडेक्स लिमिट के बाहर है तो क्या कर देगा? उसको बाय डिफॉल्ट एंड में इंसर्ट. इंसर्टिंग के समय नेगेटिव भी दे सकते हो, लाइक मैंने दिया है -4 and I'm giving सीता. Okay, print a. Now this is -1, ठीक है, -1, -2, -3, -4. Who is at -4? This true. There सीता will come and that true and everything will be shifted ahead. हमने पोजीशन -4 दिया, तो -1, -2, -3, -4. तो -4 पे सीता आ जाएगा, और जो भी -4 पे था
वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। सी, गेटिंग? राइट? तो -4 ही था ना, माइनस। अच्छा, ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट? ठीक है, ये मैंने ये वापस रन किया ना पूरा सेल, तो 1000 2 बार ऐड हुआ उसमें, तो इसलिए वहां आ गया -1, -2, -3, -4। अंडरस्टैंडिंग ना? ऑलरेडी देयर वाज द होल सेल गॉट एग्जीक्यूटेड अगेन। तो वो था, राम भी 2 बार ऐड हुआ। ठीक है, मीन्स इफ यू वांट इतना रन करने के, दिस साइड एग्जीक्यूट एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। See, getting? So now can you see -1, -2, -3, -4. At -4, Sita is put and all are shifted ahead. Getting? And negative में भी अगर आप लिमिट के बाहर अगर डाल देते हो, like यहाँ a dot in this, you have to do it separately in another cell. इसलिए क्या होता है, वो पूरा रन होता है ना, पूरा रन हुआ तो अगेन वो राम ऐड करेगा, अगेन 1000 ऐड। So here I add a dot insert, and suppose negative index I'm giving -20, ठीक है, and I'm putting value as some complex number, or suppose one, okay, I'll take 2000 suppose, and then print a. Now in this case also, can you tell me, you have given negative index, but that negative index is beyond the limit, -20 दिया, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही है, और अपने -20 दिया। It doesn't give any error. By default, it will put this value in the beginning. जैसे इस केस में 15 लिमिट के बाहर है, तो 1000 लास्ट में ऐड किया। तो नेगेटिव इंडेक्स में भी अगर लिमिट के बाहर है, -20 is outside limit, 2000 is automatically added in the beginning. Getting? See, can you see? So I hope that part is also clear to you. You'll remember this, right or no? So insert an element at specified position in this list. Where is the element inserted? At the fixed position. And whoever is there at that position is shifted ahead. Okay, example. Now we are learning these concepts, list and all. When you learn analysis part, data analysis and all, that time you realize how this list and all these things are actually important. Okay? When you'll go for some web frameworks and all, that time also you'll realize that how this list and all are practically used. Okay? Fruits, fruits dot insert 1 comma mango. Who is at one the position? Orange. 0, 1. One position orange. Their mango will come. Orange is shifted ahead. Okay? And I hope you will remember that if you give the position which is beyond limit, what happens? Can anyone tell me? If the index is not within the range. Then whatever the last index is there, the element will be positioned there. Means the element will be either added at the last or in the beginning, depending on whether the index is positive index or negative. Like if it is if it is positive and it is beyond limit, then the element is added at the last. If the index is negative and it is beyond limit, the element is added in the beginning. Okay. Okay. So examples I'm showing, not necessarily everything is shown on the slide. And purposely, I don't keep everything on the slide so that you have to attend the session. सब कुछ slides पे नहीं हो सकता है, सब कुछ notes पे नहीं हो सकता है. Correct? Otherwise, like all would have become only from the textbook, right or no? Schools में सिर्फ textbooks ही क्यों नहीं थे? Teachers क्यों appoint किए गए थे? Teachers were there and they were paid salary. नहीं तो स्कूल सिर्फ टेक्स्ट बुक देख के काम चला लेते थे ना, तो ओनली टेक्स्ट बुक सफिशिएंट नहीं रहता है. देयर इज समवन हु हैज टू टेल मेनी थिंग मोर बियॉन्ड दैट एज वेल, राइट? तो इधर एग्जांपल्स देते समय बहुत सारे और वेरिएशंस बताता हूं मैं,
Not necessary, all those are on the slide. Okay. Then moving ahead, next is extend method. Now don't confuse with append and extend. This is also commonly asked in interview, that difference between append versus extend. ये commonly पूछते हैं. Okay. Now what append does, append takes that argument as a element and it will just add that element at the end of the list. That element can be anything. एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बुलियन. वो एलिमेंट खुद लिस्ट हो सकता है, वो एलिमेंट खुद एक टपल हो सकता है. एनीथिंग इट कैन बी. It just treats it like a element and adds at the end of the list. Getting? But in case of extend, you have to give a iterable only. Here I have written a list, but general rule says you have to give an iterable. इधर क्या देना पड़ेगा? Iterable. But what does extend do? It will take the elements of this iterable and add at the end of the list. It is not going to add that iterable only. ये iterable को ही इसके अंदर नहीं ऐड करेगा. ये iterable को इसके अंदर कौन ऐड करता है? Append. Append क्या बोलता है कि whatever you pass is a element for me. आप जो भी पास करोगे वो मेरे लिए एलिमेंट है. तो वो इंट है या स्ट्रिंग है या कॉम्प्लेक्स है या वो लिस्ट है या टपल है, एनीथिंग, आई विल जस्ट टेक दैट एज अ एलिमेंट एंड ऐड एट द एंड. बट एक्सटेंड wants strictly a iterable and it will take the elements of that iterable. इसके अंदर के जो elements हैं, all the elements of that iterable are added at the end of the list. Understanding? You will be very easily able to differentiate between extend and append. देखो, A equal to, first we'll create one empty list, sorry, or one standard list 10, 20, 30. Print A dot append, and suppose I'm giving a append method and I'm giving one list to it. And you can print and see. In this case, what it will do, will it add the elements of this list in A or will it add this entire list only? ये पूरी लिस्ट ही इसके अंदर ऐड करेगा as one element. एक element consider करेगा. This whole thing will be treated as one element and added. Get it? See. It is considering this whole list as what? One element and adding it at the end, you can see. But the same thing if I do it by extend. देखो, append की जगह पे extend रखता हूं. But that I'll keep it as it is. And A dot extend, and then I'm passing any iterable. कोई भी iterable दे सकते हो. ठीक है? तो अगर मैं देता हूं 1 to 3 only. Now extend is not going to add that whole list. Rather it will add the elements of that list. ये 1, 2, 3 ये 3 elements इसमें ऐड होगा. तो आपके लिस्ट का साइज चेंज हो गया रहेगा. अपेंड करने पर साइज सिर्फ 1 से बड़ा है, बट इधर 3 से बढ़ेगा. अंडरस्टैंडिंग? Yes. आपको डिफरेंस पता भी चलेगा. देखो, इज इट एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ दैट लिस्ट इन ए? एक्सटेंड ने वो 3 एलिमेंट ऐड किए, इसलिए एक्सटेंड को Yes. हमेशा इटरेबल ही देना है. अपेंड को कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंड को इटरेबल ही देना पड़ेगा. देखो, अगर एक्सटेंड को एग्जांपल आई गिव a dot append and I'm giving any basic element, like मैंने दे दिया 10. This is a scalar value, but a dot extend 10 लिखा, it will give a error. ये इसके लिए एरर देगा क्योंकि extend needs a iterable only. See, int object is not iterable. तो extend को strictly क्या चाहिए रहता है? Iterable. Iterable, and it will add the elements of that iterable at the end of the list. Getting? देखो, a dot append and मैं append कर रहा हूं
ram and a dot extend ram. दोनों में फर्क होगा क्या, वो मैं प्रिंट करके दिखाता हूं. First case, it will just simply add that whole string only at the end. ये पूरा string ही add करेगा. String ram Yes. will get added at the end of your list. करेक्ट. तो यहां कॉमा डायरेक्ट राम दिखेगा, बट एक्सटेंड करते समय राम के लेटर्स लेगा, आर ए एम, ऐसे 3 लेटर्स इसके अंदर ऐड करेगा. देयर इज अ डिफरेंस. करेक्ट. चेक. कैन यू सी व्हाई? बिकॉज वो एक्सटेंड मेथड है. एक्सटेंड assumes whatever you pass is a iterable. एक्सटेंड क्या कहता है कि उसको जो पास करोगे वो इटरेबल है, तो वो इटरेबल के एलिमेंट्स ऐड करने वाला है, और ये पूरा एलिमेंट कंसिडर करके ही ऐड करता है. अपेंड कंसिडर करता है कि जो कुछ पास करोगे वो एक एलिमेंट है और उसको वैसे ही उठा के इसके अंदर डाल देगा. अंडरस्टैंडिंग हो नो? कहते हैं जैसे Yes. एक बैग है और एक दूसरा Yes. बैग है. आपके पास एक बैग है और एक दूसरा बैग है, और दूसरे बैग, सपोज दिस इज द बिग बैग एंड दिस इज सेकेंड बैग, एंड इसमें कुछ चीजें हैं. करेक्ट. और मेनी टाइम्स आप क्या करोगे, ये बैग ही उठा के इसके अंदर डाल देते हो. करेक्ट. एक. एंड दूसरा, ये बैग के अंदर के जो चीजें हैं वो निकाल के इसके अंदर डालते हो. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. तो एक्सटेंड क्या करने वाला है, ये पूरा बैग ही उठा के इसके अंदर डालेगा, या बैग के अंदर के जो चीजें हैं वो एक एक निकाल के इसके अंदर डालेगा. It One will by one. one by one. And if it is append, it will just put this whole bag only inside this. इसके अंदर ही वो पूरी, ये बैग इस बैग के अंदर उठा के रख दिया. ठीक है. तो extend, I hope you got it. Adds contents of given list 1 to list. यहां मैंने एग्जांपल दिखाते समय अज्यूम किया है कि जो पास किया है वो लिस्ट है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. रूल क्या है, आप क्या पास कर सकते हो, एनी इटरेबल. एनी इटरेबल में स्ट्रिंग चलेगा, लिस्ट चलेगा, टपल चलेगा, अंडरस्टैंडिंग, सेट भी चलेगा. तो एड्स कंटेंट्स ऑफ गिवन लिस्ट 1 टू लिस्ट. ठीक है. देखो, दिस इज योर फर्स्ट लिस्ट, दिस इज सेकेंड लिस्ट. a dot extend b, will it add the entire b inside it or elements of b inside this? b Elements of. एलिमेंट. तो 40 50 यहां एंड में ऐड हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो आई होप एडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में. ऐड करने के लिए क्या Yes, मेथड्स sir. देखे हमने? 3 मेथड्स देखे. वन इज अपेंड, another is insert, and third is extend. Extend. Then we have some methods for removing elements as well. Elements अगर आपको remove करने, तो उसके लिए भी methods दिए हुए हैं. तो removing elements using list method. There are few methods. उसमें से एक है pop, l dot pop, and you have to give the position, that is the index. Okay. So whatever index you give, element at that index is removed, माने delete हो जाएगा. Deleted element return होगा, याद रखना. Whatever the deleted element is, this pop will return. Okay. The element at that index from the list, वो index पे जो भी element है वो तो delete हो गया. आपकी list shrink हो गई. Shrink हो गई नहीं, समझ में ना, एक element कम हो गया. The deleted element it returns. If you collect and see, किसी वेरिएबल में कलेक्ट किया तो आपको दिखेगा वो डिलीटेड एलिमेंट आ गया. ओके. इफ द इंडेक्स इज नॉट विद इन द रेंज, आपने इंडेक्स अगर लिमिट के बाहर दिया रहेगा, जो भी उसका लिमिट है, इट विल थ्रो इंडेक्स एरर. इंडेक्स एरर, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ओके. एंड इफ यू डोंट गिव इंडेक्स, इंडेक्स नहीं देते हो, ये इंडेक्स ऑप्शनल है. When you don't give index, it is going to by default remove the last element. By default कौन सी एलिमेंट रिमूव होती है? लास्ट. ठीक है. तो ये बेसिक रूल्स है. फिर और भी मेथड्स है, वी विल बी लर्निंग. थोड़े और भी मेथड्स है, लाइक रिमूव है, डेल है,
क्लियर है? ओके, पहले पॉप के बारे में बात करते हैं. तो list dot pop and the index. Understand, index is optional. If you don't give index, it is going to delete the last item. ठीक है? देखो, I'll create a list. Whenever you need this Google Colab book, you tell me, I can download and give you. And that this same Google Colab book, you can just add it in your Google Colab and you can see all the past examples, whatever we have done. Okay? Yes, sir. Yes? Yep, sir. Like we'll even look into it practically as well, right? So you just share these examples. Yes, I'll download this notebook, this Google Colab notebook, and you can upload it in your Google Colab, right? You can include it here. Yep. Open notebook, and whichever I'll share, you can just add it in your Google Colab and you can see all the examples which we have done till now. All right. Thank you, sir. See, this is your list. This is the original list. Suppose I'm writing a dot pop 2. So now 0, 1, 2. Who is at 2th position? 30. 30 is deleted and it returns that. So 30 will be printed here. Now, if you check your list, in that 30 won't be there, right? And if I'm trying to delete any element, but I'm not giving any index, by default, the last one. Getting? And you can again check your list. See. This is your original list 10, 20, 30, 40. A dot pop 2. So who was at 2th position? 0, 1, 2, 30. So 30 is deleted and it returns that deleted element. That is 30. And now if you check your list, 30 is not there. 10, 20, 40. When you write a dot pop and you don't give any index, by default, the last one, that is 40. And check A, 40 is also not there. And if you're trying to pop with a wrong index, means index which is beyond the limit, it will throw index error. Index error, pop index out of range. Getting, guys? So I hope this part is clear. Yes. See, removes the element at given index from this list. This list means you're understanding the one which is invoking it, or the list in whose context you're calling that pop. वो pop method जिस list के context में आप invoke कर रहे हो, वो हम this list कह रहे हैं. Getting? Then, after removing that element, it returns that removed element. जो भी element delete हुआ है, वो return होगा. If the index is not mentioned, by default, it is going to remove the last element. Okay. And if the index is beyond the limit, it is going to throw index error. Example, see, this is your list a.pop2, 0, 1, 2. Who is at 2th position? 30. 30 is deleted, it returns that. Whichever element is deleted, it is returning, and that returned element you are printing. If you check the list, 30 is not there. Now a.pop and you're not giving any position. By default last, that is 40. 40 delete करके वो 40 return करेगा. अभी list check किया तो 40 नहीं. And if you try to pop something which is beyond the limit, 6 is beyond the limit. यहाँ दो ही है 0 and 1 and the position 6 is beyond the limit. It will generate index error. Pop index out of range. Agreed? Then there is another way also of deleting element by using del statement. याद रखो. This is not a built-in function also, nor it is a method. ये जो del है, ये method भी नहीं है and built-in function भी नहीं है. Means वो library function भी नहीं है and method भी नहीं है. This is a language construct. Now you'll say, what a language construct?
whatever the facility language has given, like break, continue, if else, for loop, while loop, these are the constructs provided by language only. ये language के facilities है. Del is also the language construct. Understand, guys? ठीक है? Therefore, it is not going to return the deleted element. Element delete कर देगा, but return कुछ नहीं करने वाला. Getting? You just have to write del, your list, and the position, whatever the index is. So it will delete the element at that index from your list, but it is not going to return. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं है गाइस, ये एक लैंग्वेज का ही फैसिलिटी है. लाइक इफ एल्स है, while लूप है, फॉर लूप है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, वैसे ये भी एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है. ओके, तो डिलीट तो कर देगा वो पोजीशन पे, बट रिटर्न नहीं करेगा. ओके, see, a equal to 10, 20, 30, 40 लेता है. We will print a. Then I am writing del a of 2. Now a of 2, 0, 1, 2. 2 position पे 30 है. 30 डिलीट हो गया, वो रिटर्न नहीं करने वाला, बट डिलीट हुआ है. अगर आपको चाहिए तो लिस्ट प्रिंट करके देखो. सी, a of 2, तो 2 पोजीशन पे 30 है, वो डिलीट हो चुका है. Understanding, guys? And can you check the list doesn't contain 30? Here also, if you try to delete beyond the limit, जैसे यहां मैं a of 10 लिखता हूं, ठीक है? Is a of 10 within the limit, guys? A of 10. Is it within the limit? No. Here also the same error will be generated. Index error. See. List assignment index out of range. Get it? So I hope this del is clear. And one more facility of del is you can destroy the whole list also. Like del A लिखा. ठीक है? Del A. It will delete the whole list only. Complete list ही destroy करेगा. तो अगर आप इसके बाद लिस्ट को प्रिंट करने गए, इट विल गिव यू अ नेम एरर. अभी नेम एरर आएगा, इंडेक्स एरर नहीं, नेम एरर. इट विल से देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओनली विद ए नेम एग्जिस्टिंग. ए नाम का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने वो ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. डेल ए. यू अंडरस्टैंडिंग? तो नाउ देयर वोंट बी द लिस्ट ओनली विद द नेम ए एग्जिस्टिंग. See. Why? Because you have destroyed the whole list only. Understanding? Therefore, it generates an error, name error. Name A is not defined. Getting on? Why it is giving name A is not defined? Because you have destroyed the whole list only. ये list को ही आपने क्या कर दिया? Destroy कर दिया. ठीक है? तो I'll keep this error as it is. आपके reference के लिए better रहेगा. यहां भी एक एरर आ रहा था, लाइक जब हमने इंडेक्स लिमिट के बाहर दिया था a डॉट पॉप 6, यहां इंडेक्स एरर था. इन दिस केस नेम एरर. व्हाई इट इज गिविंग नेम एरर? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द होल लिस्ट. ओके, एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज मेंशन्ड यूजिंग लिस्ट नेम एंड इंडेक्स. देखो, this is your list. Del A of 2. Who is at 2 position? 0, 1, 2. 30 is destroyed. And now if you print the list, in that 30 won't be there. Okay? And in this case also, when you go beyond the limit, index error will be generated. List assignment index out of range. Okay? And if you try to destroy the whole list only, guys, carefully याद रखो. अगर मैंने लिखा डेल ए, पूरी लिस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो उसके बाद अगर आप ए प्रिंट करने गए तो इट विल जनरेट नेम एरर. ओके,
Now, if you want to remove the elements not on the position basis, पोजीशन के बेसिस पे रिमूव नहीं करना, एलिमेंट के बेसिस पे, मीन्स मुझे एलिमेंट पता है और वो एलिमेंट मुझे डिस्ट्रॉय, हाँ, बट इफ द एलिमेंट इज रिपीटेड, इट विल नॉट रिमूव ऑल, इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट अकरेंस, जो भी उसका पहला अकरेंस है वो रिमूव कर देगा. बट हियर द रिमूविंग इज हैपनिंग ऑन व्हाट बेसिस? एलिमेंट बेसिस. ठीक है. See, I'll create another list. L equal to, suppose 10 है, 20 है, again 10 है, 40 आ गया, 50 आया, 100 आया, 500 है, 300 आता है. And now you can print and see your original list. And then I'm writing L dot remove, ठीक है? And suppose 40 I'm giving. And now you can print and see your L. 40 means 40 position नहीं है, अभी 40 एलिमेंट ट्रीट होगा. ठीक है. तो इट इज गोइंग टू सर्च 40 इन योर लिस्ट. 40 मिल गया, वो डिलीट होगा. ठीक है. सी, इज 40 गॉन? 40 के जगह पे अगर आप 10 डिलीट करने जाते थे, सी, तो 10 प्रेजेंट है, राइट? बट इज इट रिमूविंग ओनली द फर्स्ट अकरेंस? जो पहला अकरेंस था वो रिमूव किया. इज इट रिमूविंग द नेक्स्ट अकरेंसेस? बाकी के अकरेंसेस रिमूव कर रहा है. Why no? Because ये एक समय में एक ही एलिमेंट डिलीट करेगा. Okay, and if you are trying to remove some element which is not there, here it will give value error, huh, guys? Like जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं डिलीट करने के लिए 450. Is 450 there in the list, guys? L dot remove 450. Is 450 present in the list? No. जैसे इस केस में इंडेक्स एरर आता है. When you try to remove element beyond the limit, तो index error. So here it will give value error. It will search 450. 450 is not there in the list. It is going to generate value error. Can you see? List.remove x, x not in list. Remove and pop का difference क्या है? Clear है ना? Pop deletes on the position basis. Remove deletes on the element base. वो element जो दोगे वो element search होगा, एंड मिल गया तो उसको डिलीट कर देगा. तो डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट. देखो a इक्वल टू 10 20 30, a डॉट रिमूव 20, 20 है, रिमूव कर देगा. प्रिंट करके देखोगे 20 नहीं. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रिमूव, ये एग्जांपल देखो, a डॉट रिमूव 100. इज 100 देयर इन द लिस्ट, गाइज? नो. Will it generate index error or will it generate value error? Can anyone tell me quickly? Value error. It will give value error because here the deleting is not on the position basis, guys. ये element के base पे. तो remove actually slower होता है क्योंकि वो element को search करता है. Correct? And position base रहेगा तो directly it can go to that position. So 100 is searched, not found, it will give value error. List.remove x, x not in list. Is it clear? Okay. I hope this part is clear. Then if you want to just make the list empty, list will exist. List exist करेगा, सिर्फ उसके अंदर के element remove हो जाएगी. So for that we have clear method. Clear will only delete the elements from the list, but the list will exist. There is a difference. Remember, अगर आप लिखते हो del a and आप लिखते हो a dot clear, in this case a will only become empty. a existing है, a के एलिमेंट निकल जाएंगे बट a रहेगा. a को प्रिंट करके देखोगे, it will display empty list. बट डेल ए कहा तो एलिमेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया और वो ए भी खुद डिस्ट्रॉय होगा. जैसे स्विगी जोमेटो से जो बैग्स आते हैं तो मेनी टाइम्स वो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं. तो आप लोग क्या करते हो, वो बैग के अंदर के आइटम्स निकाल के अपनी अपनी जगह डालते हैं और वो बैग को भी फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं. क्यों, कहाँ इतने बैग्स जमा के रखेंगे, क्योंकि एनीवे वो डिस्पोजेबल बैग्स है. तो ये वो केस हो गया डेल ए.
गेटिंग? बट कभी कभी कहीं शॉपिंग किया और वो बैग बहुत अच्छा दिया है, क्लॉथ बैग, तो योर मॉम फोल्ड्स एंड कीप्स इट properly and then she start using that bag again. तो वो जस्ट क्या किया है, उसके अंदर के आइटम्स निकाल के रखे, बैग है एग्जिस्टिंग, एम्प्टी बैग है, यू कैन अगेन स्टार्ट एडिंग इन इट, उसमें और ऐड करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर दैट देयर इज अ क्लियर मेथड, तो रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, लाइक मेक्स लिस्ट एम्प्टी, सी ये अपनी ओरिजिनल लिस्ट. नाउ आई एम राइटिंग a dot clear print a, it will just print empty list. Okay guys, see, quickly I'll tell you. Yes, sir. A equal to 10, 20, 30, print and see a dot clear, and now you can print and see a. See, is it just displaying empty list? Whereas in case of del, can you see, जब हमने del a कहा और फिर print a कहा, it didn't print empty list, rather it gave a name error, name a is not defined. वो ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग है, आप उसमें सिर्फ बाद में एलिमेंट्स वापस ऐड कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो आई होप दिस पार्ट Yes, इज sir. क्लियर. नाउ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट लिस्ट आर रिमेनिंग, obviously in the next session we will